So generally, pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. What they're saying, जो pollen grains होते हैं which are present inside the anther, they have a tough protective coat. क्यों होता है? So they do not get dried up. But then when the anther bursts open, the pollen grains are dispersed here and there. अब जब pollen grains disperse होते हैं, some are carried by wind और वाटर. क्या होता है? कुछ को तो विंड और वाटर ले जाती है, ठीक है. विंड से आपका फ्लो होके कहीं इधर उधर गया एंड इट रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन. नाउ व्हाट इज इट्स डेस्टिनेशन? इट्स डेस्टिनेशन इज द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल. उसकी डेस्टिनेशन है स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल. यहाँ एंथर से उसको उठ के इट हैज़ टू कम to the stigma of the pistil. This is its destination, and this transfer of pollen from the anther to this stigma is known as pollination. The transfer of pollen from the anther to the stigma is known as pollination. अब ये होता कैसे है? इसको करवाने के लिए there are several modes of transferring your pollen from the anther to the stigma. One such is by air, या तो air उसको उड़ा के ले जाएगी. Another is it can be like in water plants, it can be transferred by the water. Third is or it may get attached to an insect body. कोई butterfly आई in search of nectar, that is why the flowers are so showy. फ्लावर्स इतने शोई इसीलिए होते हैं, कोई बटरफ्लाई आएगी उसके ऊपर अट्रैक्ट होगी, बैठेगी, उसके लेग्स में क्या हो जाएगा? पॉलन चिपक जाएगा. एंड देन व्हेन इट विल सिट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, it will get detached from the body there, right? So this is how your transfer of pollen grains takes place. Now there are two conditions in pollination also. One is self pollination, another is cross pollination. Self pollination कब होता है? When the pollen lands on the stigma of same flower. एक ही फ्लावर है, उसी का जो pollen grain है वो एंथर से उसके स्टिग्मा पर आ गया. या तो एक ही फ्लावर हो या फिर सेम फ्लावर ऑन दी अनदर फ्लावर ऑन दी सेम प्लांट. ठीक है, एक ही प्लांट था, उसका दूसरे फ्लावर पर जाके लैंड हो गया. दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. अनदर कंडीशन इज योर क्रॉस पॉलिनेशन. किसी दूसरे फ्लावर पे जो किसी दूसरे प्लांट पर था वहाँ पर जाकर अगर पॉलन लैंड हुआ, दैट कंडीशन इज योर क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ पॉलिनेशन भी हो गया. Your pollen grain has got settled down on the, look at figure 12.1, it has got settled down on the stigma. Now how will this male gamete which is in the pollen grain reach the female gamete which is in the ovule? How will it reach? So for that your pollen grain starts germinating and it forms a pollen tube. This pollen tube then reaches where? Look at this. It reaches inside the ovary, then ovule and then hair. यहाँ पे देखो, the male and female gamete both are present. Now what happens? The fusion of male and female gamete takes place and this process is known as fertilization. जब male और female gamete का fusion हो जाता है, this is known as fertilization. And then what is formed? A zygote is formed. So this zygote will in turn form a seed. Okay, so now let's move on. After the fertilization, the zygote develops into an embryo. After that, it will form into an embryo and that embryo is inside the seed. Now, fruits and seed formation. After fertilization, the ovary grows into a fruit and other parts of the flower fall off and the fruit is a ripened ovary. क्या बता रहा है वो? फ्रूट कहाँ से बनता है? जो ओवरी होती है वो ही आपकी जब राइप हो जाती है, that is known as fruit. And जो ovules होते हैं, they turn into seeds. Okay? So now some fruits are fleshy and juicy like mango and orange. Some are dry. So it depends. जो ओवरी उसकी जैसी होगी उसी हिसाब से उसका फ्रूट होगा. Now we come to seed dispersal. अब आपका सीड भी फॉर्म हो गया, लेकिन सीड का भी तो डिस्पर्सल होना ज़रूरी है, अदरवाइज न्यू प्लांट कैसे बनेगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स जिनके पास सीड है, वो तो अपने आप लगा देंगे. बट व्हाट अबाउट द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट में कैसे डिस्पर्सल होता है?
So seeds, nature has got its own type. It itself disperses seeds to different places. Like sometimes after a walk through a forest or a field, you may have found seeds of fruits sticking to your clothes. कभी कभी क्या होता है, किसी ह्यूमन के ऊपर या किसी एनिमल के ऊपर जो सीड्स होते हैं वो चिपक जाते हैं. ठीक है. देन व्हाट विल हैपन, यू आर मूविंग समवेयर एल्स, वो वहाँ पे जाके ड्रॉप हो गया. अगर उसको प्रॉपर कंडीशन मिली, उसको मॉइस्चर मिला, it will grow into a new plant. Now why your seed dispersal, now what they are saying, why your seed dispersal is necessary. ऐसा भी तो हो सकता है भाई फ्रूट वहीं का वहीं गिर गया, उसमें इतने सारे सीड्स थे, सारे के सारे प्लांट्स निकल जाएंगे. why we need to disperse them, क्यों उनको दूर दूर करना है? so that there is no competition, because if they would drop on the same area, then there would be severe competition for sunlight, water, mineral and space. सब में competition हो जाएगा, एक ही जगह पे जगह cluster form हो जाएगा तो sunlight भी होगी, roots water लेने में भी लड़ाई करेंगी, then your for minerals also, for space also there would be a tough competition. So it is necessary that the seedlings or the seeds gets dispersed. Now what are the ways by which it is dispersed? Same as the pollens. जैसे wind, water, animals के through आपके pollens disperse होते हैं, वैसे ही seed disperse होता है. क्या क्या conditions हैं? Winged seeds भी होते हैं, which have got slight wings, which can fly from here to there, like in drumstick and maple. Then light seeds, obviously if they are light, they can be flown away by air. Then some seeds are dispersed by water, because or they have floating ability, they have spongy, like in coconut. some are dispersed by animals. अब जो animals पे disperse, उनको क्या होता है, hook जैसा होता है उनकी body पे, या spiny होता है, so that they get stick to the body of an animal or the human beings. For example in xanthium and urina. Now they have given you the figures. Figure 12.3, look at this, of a drumstick and a maple. They have got wings, so they can easily fly in air from here to there. 12.4, the hairy fruit of sunflower, so that it can also fly here and there, it can be easily traveled, it can be easily taken by the wind. Then the hairy seed of oak. Then your xanthium, which has got a spiny coat. The spiny coat क्यों है? So that it stick on the surface of the it stick on the skin of the animal or any human being, and then it is dispersed from here to there. So this was all about your chapter.